student, in last class we have understand what is statistics and what is the need of statistics, importance of statistics, and what is the scope of statistics. So in this class we have understand what is the limitation of statistics. So here I am write down only the 6 limitation of the statistics. So first limitation, it is qualitative aspect ignores. Then what is the meaning of this? The meaning of this, in statistics, the statistical method do not study the nature of phenomena, which मैम आप cannot थोड़ा be yes. थोड़ा हिंदी में भी तो बोलो। अरे एक बार एक लाइन इंग्लिश में बोल दो, फिर हिंदी में बोल दूंगी, ठीक है? ठीक है, दोनों 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 बोला जाएगा, ठीक है ना? ठीक है। ओके। और मैं इंग्लिश में भी बहुत धीरे धीरे स्लोली स्लोली बोलूंगी कि आपको समझ में आएगा, ठीक है? ओके, आई विल ट्राई। मैं हिंदी में भी बोलूंगी, इंग्लिश में भी बोलूंगी, ओके, ठीक है? ओके तो मैम। फर्स्ट, what is the qualitative aspect ignore? Means the statistical method do not study the nature of phenomena, which cannot be expressed in quantitative terms. Means such phenomena cannot be part of the study of statistics. These include health, rich, intelligence, etc. It needs convergence of qualitative data into quantitative data. So, experiments are being undertaken to measure the reaction of man through data. Nowadays, statistics we have used in all the aspect of the life as well as in universal activities. So, in what is the meaning of qualitative aspect ignore means? So, in this we have the statistical method. What is method we have in statistics? So, the statistical method do not study the nature of phenomena, which cannot be expressed in quantitative terms. So, such phenomena cannot be the part of the statistics. These include health, rich, intelligence, etc. It needs the convergence of qualitative data into quantitative data. So, experiments are being undertaken to measure the reaction of men through data. Nowadays, statistics is used in all the aspect of life as well as universal activities. Then, okay, what is the meaning of quality aspect in not means? इन स्टैटिस्टिक्स हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में जो भी डेटा हमारा अगर क्वांटिटेटिव हुआ, क्वालिटेटिव नहीं है. व्हाट इज क्वांटिटी मतलब, एंड व्हाट इज द मीनिंग क्वालिटेटिव? जब हमारे पास डेटा उसमें होता है, नंबर्स में डेटा नहीं है. हमारे पास कभी कभी होता है ना, नंबर्स में डेटा नहीं होता है. हेल्थ हुआ, जैसे इंटेलिजेंसी, उसको हम नंबर्स में डिफाइन नहीं करते. समटाइम बहुत सारी डेटा भी है, मेनी टाइप्स ऑफ डेटा भी है, हमारे पास जो नंबर्स में डेटा नहीं होता है. अगर वो डेटा नंबर्स में नहीं होता तो उस पर हम कोई भी स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? अगर हमारे पास डेटा नंबर्स में है, then we have applied the statistical tool. But when the data we don't have in the form of numbers, हमारे पास तो नंबर्स में डेटा नहीं है, तो हम उसके ऊपर कोई भी स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई नहीं कर सकते. तो इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें? इसके लिए वी हैव कन्वर्ट द डेटा इनटू क्वालिटी. वी नीड कन्वर्जन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा इनटू क्वांटिटेटिव डेटा. मीन जो भी हमारे पास नंबर्स में डेटा नहीं है, नंबर्स में नहीं है, जैसे इंटेलिजेंस हुआ, हेल्थ हुआ, रिचनेस हुई कि कितने पीपल हाई क्लास है, मीडियम क्लास है, तो हम उस डेटा को कभी उसमें नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. व्हेन वी हम जब नंबर में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते तो उस डेटा को हम नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं. सो वी हैव मेनी मेथड्स. सो इफ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी हैव फेसेस in the statistics, we have faced this type of problem when the data, हमारे पास जो डेटा है वो नंबर्स में नहीं है, हमारे पास डेटा जो है थ्योरी में, मतलब आप मतलब मींस टेस्ट में, मतलब डेटा इंटेलिजेंस डेटा, हेल्थ से रिलेटेड डेटा, वोटर डेटा यू है. सो दिस टाइप ऑफ डेटा वी हैव जब होता है तो डेटा तो हम, ये सब वन डिसएडवांटेज है स्टैटिस्टिकल का,
कि जब हमारे पास नंबर में डेटा नहीं होता है और वैसे डेटा होता है तो वी आर अनएबल टू अप्लाई एनी स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर डेटा. सो ऐसे डेटा को हमें क्या करना पड़ता है, पहले इस डेटा को हमें नंबर थ्योरी को नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है. जब हम इसको नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं सो मेनली बहुत सारे एक्सपेरिमेंटर्स मींस बहुत सारे जो रिसर्चर होते हैं, जो पर्सन इसको अप्लाई करते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग इसका रिएक्शन देते हैं. व्हेन वी फिल अप द फॉर्म फीडबैक फॉर्म, व्हेन वी हैव फिल अप एवरेज, पुअर, excellent, average, poor. So सब पर्सन टू पर्सन इट इज वेरी करता कि वो एवरेज कितना ले रहा है, मींस एक्सीलेंट कितना हो रहा है, पुअर कितना जा रहा है. सो नंबर टू मतलब हम डेटा को कन्वर्ट भी कर ले, लेकिन वो होता है ना पर्सन टू पर्सन इट इज वेरी कि कौन कैसे इसको देख रहा है डेटा को. सो इट इज द वन डिसएडवांटेज ऑफ द स्टैटिस्टिक्स. इट इज कि हमारे पास व्हेन वी हैव डेटा इन द नॉट इन नंबर्स, नंबर्स में जब हमारे पास डेटा नहीं है तो वी आर अनएबल टू अप्लाई एनी स्टैटिस्टिकल मेथड ऑन द डेटा सेट. यस, इट इज क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes, Okay. ma'am. I will repeat or not. Yes, Again, ma'am. I will repeat. It is enough. Again repeat. Again, repeat. Okay. So qualitative aspect ignore means जब हमारे पास डेटा, इसका सिंपल सा मेथड फंडा यही है इन स्टैटिस्टिक्स. जब हमारे पास डेटा ओनली नंबर्स में नहीं है, नंबर्स के अलावा डेटा होता है, जैसे मैंने एक फीडबैक में हमने एग्जांपल लिया, जैसे एक्सीलेंट, एवरेज, पुअर, वी हैव डिवाइडेड इन 3 कैटेगरी. इफ दिस टाइप ऑफ डेटा वी हैव, तो हमारे पास इन नंबर्स में डेटा नहीं है, हमारे पास टेस्ट में डेटा है, स्ट्रिंग में डेटा है. सो जब ऐसा डेटा हमारे पास होता है तो वी आर अनएबल टू अप्लाई एनी स्टैटिस्टिकल मेथड. हम उस पर कोई स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई नहीं कर सकते. वी आर स्टैटिस्टिकल मेथड डू नॉट स्टडी दिस टाइप ऑफ नेचर ऑफ फिनोमेना. सो हमारे पास ऐसा डेटा है तो उसको पहले हम नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं. नंबर्स में अगर हमने कन्वर्ट भी कर दिया तो क्या होता है, पर्सन टू पर्सन इट इज वेरी. ओके, सो मीन्स पर्सन टू पर्सन इट इज वेरी मीन हर एक पर्सन अलग बेसिस को देखता है कि व्हाट इज द रिएक्शन. हर पर्सन, एवरी इंडिविजुअल पर्सन गिव द डिफरेंट रिएक्शन. सो इट इज द वन डिसएडवांटेज ऑफ द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर. ओके, देन सेकंड इज it is does not deal with the individual item. Individual item means हमारे पास कोई भी डेटा, what are data you have, अगर मेरे पास सिर्फ एक ही इंडिविजुअल टर्म है, वन मीन्स सपोज द इंडिविजुअल टर्म इज नंबर ऑफ डेथ ऑफ 6%, डेथ ऑफ 6% इन एक्सीडेंट. अगर मेरे पास ऐसा डेटा है कि 6 लोग हैं जिनका एक्सीडेंट है, उससे उनकी डेथ हो गई. सो ये मेरे पास सिर्फ एक नंबर इंडिविजुअल टर्म है, उसको मैं किसी से कंपेयर नहीं कर पा रही. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मीन्स होता है उसका कोई रिजल्ट नहीं, मैं नहीं निकाल पाती. अगर मेरे पास यही होता, इंडिविजुअल ना हो कि मेरे पास बहुत सारे डेटा होता कि उस पर्टिकुलर रोड पे इतना एक्सीडेंट हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो वी कैन कंपेयर कि व्हाट इज द रीजन. सपोज सो आई एम टेलिंग ओनली death of 6% in an accident. So means what is this? It is not a data. So if we have means we have the individual data. So statistical tool does not deal with the individual item. For example, 85% result of class of a stool in a particular year. So means what is the meaning? Meaning it is clearly 85 result of class of stool and particularly 85% result रहा. But what is the idea? हमें ये कोई idea नहीं बता रहा है. So statistical is does not deal with the individual item. So it is clear from the definition. One professor give the one definition. So by statistics we mean aggregate of fact and place in relation to each other. Means statistics का mean क्या होता है? We mean aggregate of fact means हमारे पास जितने भी facts है, जितने भी इसके reason है या जो भी solution है, वो सबको हम combine करते हैं and then we have compared with each other.
अगर ऐसा है तो इट इज गुड फॉर अस, बट सिर्फ वी हैव ओनली इंडिविजुअल टर्म. Individual term means it does not recognize any individual item. Individual term is a death of 6% in an accident, 85% of result of class of stool and a particular day will not amount to statistics if they are not placed in a group of similar items. So it does not deal with the individual item. Many times important they may have, however important they may have, sometimes it is important, but it is not deal with the individual item. Means अगर आपके पास कोई भी डेटा कुछ भी है तो हमारे पास अगर ओनली सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल नहीं तो हमारे पास सिंगल डिजिट है, तो वी आर अनेबल टू गिव अस क्या बता रहा है वो डेटा, क्या हो रहा है, कोई ना कंपैरिजन कर सकते. वी आर अनेबल टू डू एनी कंपैरिजन बिटवीन दिस कि 6% इन डेथ ऑफ 6% इन एक्सीडेंट. तो विस्ता हमारे पास ये सेंटेंस है, ये इंडिविजुअल टर्म हुआ, हम इसका कोई कंपैरिजन या इसकी कोई इस पे कोई रिसर्च व्हाट वी वांट टू डू बट वी आर अनेबल टू डू. सो स्टैटिस्टिक्स second disadvantage is this, it is does not deal with the individual item. Yes, it is clear. Yes, ma'am. Okay, third is it is liable to be misused. स्टैटिस्टिक्स का बहुत मिसयूज होता है. ओके, स्टैटिस्टिक्स डील विथ नंबर्स एंड फिगर्स. स्टैटिस्टिक्स ऑलवेज न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ ही डील करता है. सो विच कैन इजीली मिस इंटरप्रिटेड बाय द अनट्रेन्ड पीपल और मिसयूज बाय द एनी पर्सन. सो इट इज द वन मोस्ट डिसएडवांटेज इज दिस. स्टैटिस्टिक्स जो होता है नंबर्स के साथ डील्स करता है, तो नंबर्स को पर्सन अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेट कर सकता है. अगर वो पर्सन एक्सपीरियंस नहीं है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, अनट्रेन्ड है, तो दिस टाइप ऑफ पीपल वी हैव. सो क्या करते हैं, वो इजीली उसको मिस इंटरप्रिटेट कर देते हैं, देन उसका कंक्लूजन कुछ और है वो उसका इंटरप्रिटेशन ही कुछ और कर रहे हैं. एंड सेकंड टाइप दिस, इट इज मिसयूज्ड बाय द मेनी पर्सन. मतलब होता है ना, इसका मिसयूज बाय पर्सन किया जाता है एंड इट इज very likely to be misused most of the case. Most in government आप जितना भी पॉलिसी देखेंगे ना, हर एक पॉलिसी में we have applied the statistics. So person to person it is very कि वो उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, इंटरप्रिटेशन how can we interpret it, and second कि वो उस डेटा को कैसे मिसयूज कर रहे हैं. So statistics it is reliable to be misused. स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज किया जाता है और उसका इंटरप्रिटेशन पर्सन टू पर्सन इट इज वेरी कि डेटा क्या है. पर्सन आई एम से समथिंग अबाउट द क्लास मार्क्स, एनीवन से, सो इट इज मिस इंटरप्रेटेड बाय द पर्सन टू पर्सन एंड इट इज ऑलवेज मिसयूज बाय द एनी पर्सन. मीन्स होता ना कोई करप्शन से रिलेटेड डेटा है, वोटर डेटा जो भी होता है उसका मिसयूज बहुत किया जाता है. सो इट इज रिलायबल टू बी misused. So we can say that we can check the data and procedure of it is approaching to conclusion, but these data हम data को check करें, procedure check करें कि these data may have been collected by inexperienced person. अगर हमने कोई डेटा कलेक्शन किया, वो हमने किसी इनएक्सपीरियंस पर्सन जिसको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, हाउ कैन वी कलेक्ट दैट. अगर उसके थ्रू डेटा कलेक्ट किया तो वी हैव maybe we have some dishonest or biased data. जो भी डेटा हमारे पास होगा it is biased, so our result is also biased. So always it is liable to be misused. Then result are true only on average. जो भी हम statistical method we have applied, statistical results are not absolutely true and are not applicable to individual case, even though they are derive an average result of all the individuals forming the group. Means statistical result are not absolutely true. Statistical result जो होता है वो आप कोई भी नहीं कह सकते it is 100% true. Okay, it is on an average it is true. So statistical results are not absolutely true and
are not applicable to individual ये individual केस में वैसे applicable नहीं होता है, and even though they are derived as the average result of all the individual from the group. Means जब भी हम किसी भी सीरीज का कोई भी मॉडल वॉटर वी हैव टेक, जब हम उसका रिजल्ट निकालते तो वो एवरेज रिजल्ट ही निकालते हैं, वो हम वी आर कैन नॉट से इट इज द 100%. जब हम इंडिया का पॉपुलेशन भी कलेक्ट किया जाता है ना थ्रू सेंसस, in every 10 year it is collected, so it is not writing ki only 126 crore is the population of 2011. It is average 126 crore population in the India. उस टाइम ऐसा लिखा जाता. So statistics always give the result on an average, not give the 100% true result. It is the most important disadvantage of the statistics. Then and next is too many method to study problem. मैम Statistics the yes आप एक बार ये yes और बताओ, मिसयूज्ड कौन वाला सा और वाला मिसयूज्ड. misused. So 1 minute I will repeat again. What is the meaning of misuse? Statistics में क्या होता है बच्चे कि हम स्टैटिस्टिक्स में हमेशा किसके साथ डील करते हैं, नंबर्स. हमारे पास जो डेटा होगा नंबर्स में डेटा होगा. उस डेटा को क्या होता है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वो अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेट कर दे. उसका अनट्रेन पर्सन है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, या तो ये रीजन हो सकता है कि कोई पर्सन होता है कि डेटा का ही मिसयूज करना होता है उसको. सो अगर हमारे ऐसा होता है मेनी टाइम इट इज ऑलवेज हैपन. मतलब हम स्टैटिस्टिक्स का जो रिजल्ट हम निकालते हैं उसका इंटरप्रिटेशन हम बहुत टाइम गलत कर देते हैं. फर्स्ट ये होता है. उसका मिसयूज भी मेनी टाइम वी हैव डन मिसयूज. मिसयूज मींस इन आप जब गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर बैठे हैं, आई एम नॉट फोकस ऑन गवर्नमेंट सेक्टर, तो जब गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं जो भी अब वो डेटा कलेक्ट करते हैं उसको अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं. क्योंकि डेटा क्या होता है, डेटा इज ऑलवेज इन नंबर्स, डेटा नंबर्स में ही है, तो उस डेटा को वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं. सपोज आप डेटा कलेक्ट करने के लिए क्वेश्चन फिलअप कर रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन फिलअप कर रहे हो, आपने या तो कुछ जल्दी क्वेश्चन फिलअप करना है, आप तो भाई नहीं जल्दी जल्दी करना, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेते हो. जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो सही आएगा, ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा. उस टाइम आपका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा. ये की रीजन होता है. देन सो अगर हमारे जो ऑलरेडी जो वो होता है ना करप्ट पर्सन होते हैं, सो इट इज ऑलवेज यूज द रिजल्ट. जो भी न्यूमेरिकल फिगर्स होते हैं ना उसको अप डाउन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू अस, अपने अकॉर्डिंग उसको थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं. सो इन डेलिकेट साइंस एंड कैन बी इजीली मिसयूज्ड बाय द correct person. So data must be used with a quotation, otherwise result may prove to be a ओके. सो ऑलवेज रिमेम्बर कि आपका जो डेटा है, आप जो भी डेटा आप यू हैव यूज, एक तो उसका इंटरप्रिटेशन अगर आपने गलत कर दिया तो डेटा का मिसयूज ही हो गया. मींस मिसयूज हो गया मींस अनट्रेंड पर्सन है, आपने जो डेटा कलेक्ट किया उसका आपने अच्छे से इंटरप्रिटेशन ही नहीं किया, आपका डेटा कुछ और था, आपने रिजल्ट कुछ और कर दिया, तो आपने अपने अकॉर्डिंग उसको इंटरप्रिटेट कर दिया, अपने अकॉर्डिंग उसका यूज ले लिया उस डेटा का. तो इट इज द most disadvantage of this statistics. Means आप एक एग्जांपल लीजिए. सपोज मेनी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग इज देयर. सैम्पलिंग मींस आप जो डेटा कलेक्ट करते हैं ना, सैंपल लेते हैं, उसकी मेनी टेक्निक्स आर देयर इन. ओके, अगर आपका डेटा होमोजीनियस है, सपोज आप सोचिए आपका होमोजीनियस है और आपने उस पर ऐसा टूल अप्लाई कर दिया जो हेट्रोजीनियस डेटा पे अप्लाई करना चाहता है, जो भी आपका इंटरप्रिटेशन आएगा वो क्या आएगा, रॉन्ग आ जाएगा. उसने अपने अकॉर्डिंग भाई जो मुझे इजी लगता है, ये मेथड मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग इस मेथड को फिट कर देता हूँ. ये भी हो सकता है. या आप तो गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं वह, तो गवर्नमेंट ऑफिसर जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो अपने अकॉर्डिंग उसको यूज ले लेते, उसका मिसयूज ले लेते हैं. सो इट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इट इज द रिलायबल टू बी मिसयूज्ड. So then next is too many method to study problem. Statistics the most disadvantage is this कि we have many method for calculation. So in this subject we use so many method to
find a single result. अगर हमें किसी डेटा है हमारे पास उसका वेरिएशन फाइंड करना, वी वांट टू फाइंड द वेरिएशन इन दिस सीरीज, तो वेरिएशन के लिए हमारे पास वो डेटा वेरिएशन कैन बी फाउंड बाय द क्वांटाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन. Hello. सो यस, Ma'am, voice is not coming clearly or कौन सा वाला नहीं हुआ है? Ma'am, your ma'am, ये जो आप presentation is also not visible. PPT is not visible. No, ma'am, it's showing. Ma'am, your Yes, ma'am, PPT now is it's not visible. visible. 1 minute. Ma'am, now it's visible. Now it is visible. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So next is too many method to study problem. So statistics में क्या होता है? We have a many methods. हमारे पास statistics में क्या है? We have a many method for calculate any problem. Suppose हमें किसी series का variation we want to find. हमें variation find करना. How can we find? तो variation find करने के लिए we have a many method. Measure of dispersion. statistics continue. तो ना हमारे पास वेरिएशन फाइंड करना है कि डेटा में कितना वेरिएशन है, उसको फाइंड करने के लिए भी है मेनी मेथड. सो स्टैटिस्टिक्स, in statistics we have a many method to study problem, and statistical result are not always beyond doubt. हम जो statistical का result we have find, whatever result we have find is always in doubt. मतलब हम, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी स्टैटिस्टिकल रिजल्ट आता है इट इज ऑन एन एवरेज, इट इज ट्रू, 100% इट इज नॉट ट्रू. सो statistics deal only with measurable aspect of things and therefore can seldom give the complete solution to problem. Okay, they provide a basis for judgment but not the whole judgment. All this we use many laws, formula in statistics, but still the result achieved are not final and conclusive. Means statistics is same as the I'm in last to last we have tell statistics always give the result on an average, not give the exactly result. So statistics result are not always beyond doubt. मतलब हमें हमेशा डाउट रहता, जो भी रिजल्ट हमने फाइंड किया हम नहीं कह सकते कि इट इज 100% ट्रू. अगर हमने व्हेन वी हैव टेक द लिटरेसी रेट इन द राजस्थान इट इज 64 point something, so we are not saying that it is 100% we are sure कि it is a 64.5. so always नंबर से ऊपर नीचे थोड़ा हो जाता है स्टैटिस्टिक्स में. तो स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट are not always beyond the doubt. Yes, any doubt? Yes, student. Again repeat. Which last? Yes, please. आप ऐसे शर्माइए मत, इसमें कोई वो वाला बात नहीं है. कौन सा लास्ट पॉइंट? ये ट्रू ओनली ऑन एवरेज है और ये स्टडी प्रॉब्लम है. देखो जो भी हम ये रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज मींस व्हाट इज द मीनिंग? ट्रू मींस जो भी हम रिजल्ट फाइंड करते हैं स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, जो भी हम स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करें. अभी तो आप स्टैटिस्टिक्स सुनो, उसके अंदर बहुत सारे मेथड होते हैं. मीन, मोड, जैसे हमें एवरेज कैलकुलेट करना है. सपोज वी वांट टू कैलकुलेट एवरेज, तो वहां पर एवरेज कैलकुलेट करने के भी हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं. सपोज मीन है, mean it is also give the average, mode it is also give the average, median it is give also average. So जो भी हम रिजल्ट फाइंड करते हैं थ्रू सबके रिजल्ट अलग अलग आते हैं. मीन से जब हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो वी हैव डॉट अनदर नंबर्स, मोड, मीडियन, ऑल जो भी हमारे पास स्टैटिस्टिकल टूल्स है जो अलग अलग रिजल्ट देते हैं. सो in statistics we have many method for calculation. One, कोई भी स्टडी प्रॉब्लम सपोज वी वांट टू फाइंड द वेरिएशन बिटवीन सीरीज. मेरे पास एक सीरीज है, सपोज आप विराट कोहली ले लीजिए. विराट कोहली क्रिकेट देखते हैं शिवम आप? यस, इंडिया में तो हर दूसरा इंसान देखता है. Yes, ma'am. तो सपोज है ना, तो विराट कोहली, तो उसका जब आप बैटिंग लाइनअप देखेंगे ना, उसकी बैटिंग वो कैसे बैटिंग कर रहा है,
बैटिंग कर रहा है वो, तो आज का अच्छा रन बन रहा है, कल नहीं बन रहा, आज ये बन रहा है, ये बन रहा है। सो हम इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, मीन्स इसका लाइनअप क्या है, इसका ऑन एन एवरेज कितना बन रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या नहीं हो रहा। सो ऑन एन एवरेज, सो विराट कोहली का बैटिंग लाइनअप वी हैव सीन। सो तो उसका लाइनअप मतलब क्या उसकी परफॉर्मेंस क्या नहीं है, उसको फाइंड करने के लिए वी हैव मेनी मेथड इन स्टैटिस्टिक। सो टू मैनी मेथड टू स्टडी प्रॉब्लम। हमारे पास स्टैटिस्टिक में अगर कोई एक प्रॉब्लम आई है कि हमें ये कुछ फाइंड करना है, वेरिएशन फाइंड करना है, जैसे विराट कोहली की वेरिएशन देखना है, उसने फर्स्ट 10 इनिंग ली, फर्स्ट मतलब उसके 10 मैच का स्कोर लिया कि हम देखते हैं इसमें कितना वेरिएशन है, कि फर्स्ट मैच में इसने 100 बना लिया, सेकंड में 50 बना लिया, थर्ड में 75। तो ये क्या है, डेटा में कितना वेरिएशन, स्कोर में कितना वेरिएशन हो रहा है मैच बाय मैच। सो इस वेरिएशन को कैलकुलेट करने के लिए स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मेनी टाइप ऑफ मेथड आर देयर फॉर कैलकुलेशन। सो इट इज द मीनिंग ऑफ दिस, too many method to too many method to study problem. Yes, it is clear, Shia? Yes, ma'am. Okay. And then what is the meaning of result are true only on average? Means हम जब भी statistical tool, whatever tool we have applied, so in this जो भी हमें रिजल्ट मिलता है ना, हम नहीं कह सकते इट इज 100% ट्रू रिजल्ट। मीन्स जो भी नंबर्स, जो भी फिगर्स वी हैव गॉट, ऑन एन एवरेज ही होता है। हम नहीं बोलते हैं ऑन एन एवरेज आज विराट कोहली इतनी बैटिंग कर लेगा, ये हमने पहले से अजम्पशन बना लिया कि ऑन एन एवरेज। ओके, सो इट इज द मीनिंग ऑफ ऑन एन एवरेज। सो हम जो भी स्टैटिस्टिकल के रिजल्ट आते हैं ना, वो ट्रू नहीं होते, मतलब 100% हम नहीं कह सकते हैं कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन 126 करोड़ है। सो हम यहाँ पर कहेंगे कि ऑन एन एवरेज इंडिया पॉपुलेशन इज 126 करोड़। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज दिस। सो रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज, एग्जैक्टली ट्रू नहीं है। 100% हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि इंडिया की पॉपुलेशन 126 करोड़ है। हम कह सकते हैं ऑन एन एवरेज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 126 करोड़। यस, इट इज क्लियर? Yes, ma'am. Yes, Any ma'am. doubt? Yes, No, ma'am. any doubt? No, ma'am. No? Okay.